Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students. Now in this video we'll discuss about the structure of nucleic acid. So let's discuss how the nucleic acids are formed. What are the components of the nucleic acids? So here the three important components are responsible for making a nucleic acid. एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलके बना है. वो क्या है देखते हैं. Let's write this is nucleic acid and it has three important components. The first one is the sugar and this sugar is the pentose sugar. The first is pentose sugar. The another component is the nitrogenous base, and the third one is phosphoric acid. The third component is phosphoric acid. So these are the three important. First of all, we will discuss about the pentose sugar. Pentose sugar, which is the 5-carbon sugar. That's why the name pentose sugar is given. Pentose sugar, जो हमने word use किया है pentose, वो है 5 कार्बन के लिए. ये 5 कार्बन structure है. That's why we are using this word pentose sugar. Here, the sugar that is present into the nucleic acid, it could be of two types. It could be ribose or deoxyribose. We will discuss about these structures also. दो तरीके की pentose sugar हो सकती है. First है ribose and another one is deoxyribose. Ribose which is found into the RNA and deoxyribose which is found into the DNA. Deoxyribose nucleic acid DNA में मिलती है deoxyribose. Ribose which is a 5-carbon structure. इसकी structure कैसी होती है? Let's see. Structure is like this. This is the structure of this pentose sugar. It has 5 carbon. Here the carbon number 1 is present. First carbon यहाँ पे होगा, second यहाँ होगा, third one will be here. This 1, 2, 3, 4, and the fifth carbon is here. It's बाहर की तरफ होता है. It's not making the ring. ये ring में present नहीं होता. In the ring here the 4 carbon and 1 oxygen is making the ring. The fifth carbon is present outside. So this is the fifth carbon which has CH2OH. So let's write all the groups here. H, OH, H, OH, and third carbon also H, OH, and here the H. We are balancing all the valences so that we can understand it easily. So this is about the structure of the ribose sugar. In the ribose sugar, we can say that it's a 5-carbon structure, but only the 4 carbons are participating in making a ring. The fifth is the oxygen. Fifth carbon is outside the ring, and one oxygen is included inside this ring. So this is a pentose sugar. In this pentose sugar, we can say that it has 2 OH group. यहाँ पे इसके अंदर 2 functional OH group होते हैं. One is present at a second carbon, and another one is present at the third carbon. So in the pentose sugar, it has 2 functional OH group which make it more reactive. इन्हीं 2 OH की group presence की वजह से, इन 2 OH functional group की presence की वजह से ये pentose sugar जो RNA के अंदर present होती है, it makes RNA the more reactive. Whereas in the case of deoxyribose, अगर हम deoxyribose sugar की बात करते हैं, structure is almost same, structure wise same है, सिर्फ एक difference जो हमें देखने को मिलेगा. Let's see what is the difference between ribose and deoxyribose. Again, this is the carbon number 1, this is 2, 3, 4, and the fifth carbon is the outside. Here the H, OH is here, here H and OH is here, H and OH is here, and here H, and here CH2OH. This is the pentose sugar. We make it similar. This is the pentose sugar. But what is the difference between this pentose and this ribose? Sorry, this is the ribose sugar. हमने ribose sugar ही यहाँ पे बनाया है अभी. But what is the difference between this ribose and deoxyribose? Difference is only a single point. At the carbon number 2 पे that this functional OH group, if this functional OH group has only the H, यहाँ पे इस second carbon पे एक oxygen deficient होगा. It has 1 oxygen deficient than the ribose sugar. एक oxygen की कमी होगी. It has only H at the second carbon. Here the functional OH group is not present into the deoxyribose sugar. Whereas into the ribose sugar it has 2 OH group, 2
functional OH group, whereas into the deoxyribose it has only one functional OH group, and this is this one. ये वन फर्स्ट OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, फंक्शनल होगा, एंड दिस ओनली वन दिस फंक्शनल OH ग्रुप इट मेक्स द डीएनए मोर स्टेबल होता है। हमने ये चीज देखी है जेनेटिक मटेरियल की, जब हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल होना चाहिए, रेप्लिकेट होना चाहिए, मींस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आरएनए के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से आरएनए रिएक्टिव हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। That thing we discuss in later on also in very detail. So यहाँ पे एक बार इस चीज को सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है that in deoxyribose it has only one OH group at the third position, whereas into the ribose sugar it has two functional OH group. First one is at the second carbon, another one is at the third carbon. So this is about the ribose sugar. ये हमने बात कर ली है ribose sugar की. Now let's move on to the next component, that is the nitrogenous base. When we talk about the nitrogenous base also have the two types. Nitrogenous base के भी two types हैं, दो तरीके के nitrogenous base यहाँ पे present होंगे. The first one is the purine, and another one is the pyrimidines. You also studied about all these into the previous class. 11th class में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, but we will discuss about it here also. हम यहाँ पे भी थोड़ा इनके बारे में discuss करेंगे. Now, purine and pyrimidines, these two are the nitrogenous base. Let's take a comparison between both of these so that we can easily understand. दोनों में comparison देख लेते हैं हम. जब हम purine की बात करते हैं, the examples of the purine की जो example है, two types की purine होगी, that is adenine, and second one is the guanine. Adenine and guanine. These are the example of purine. Whereas pyrimidines, अगर हम इनके एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं थ्री टाइप्स मिल रहे हैं, दैट इज साइटोसाइन, अनदर इज थायमीन, एंड द थर्ड वन इज द यूरेसिल. दीस आर द थ्री pyrimidine. In one genetic material, whether it is DNA or RNA, only two purines and two pyrimidines are found. सिर्फ two purine या two pyrimidine, two purine और two pyrimidine होंगी. थ्री जो है थ्री pyrimidines प्रेजेंट नहीं हो सकते. अगर हम DNA की बात करते हैं, DNA has both of these two purines, adenine and guanine. Whereas pyrimidine की अगर हम बात करते हैं, DNA में जो pyrimidine प्रेजेंट होती है वो कौन सी होगी? It has cytosine and the thymine. Cytosine and thymine. These are the two pyrimidines which are found into the DNA. Whereas into the RNA, अगर हम RNA की बात करें, RNA के अंदर कौन सी pyrimidines होगी? It has two pyrimidines, that is cytosine and another one is the uracil. In place of the thymine की जगह पे uracil present होता है RNA के अंदर. That is the difference between DNA and RNA. So these are the types of, or we can say the examples of purines and pyrimidines. अब हम इनके differences देखते हैं. The purines, these purines are the dicyclic structure. Dicyclic structure. Two cycles present होते हैं purines के अंदर, whereas into the pyrimidines they are monocyclic. They are monocyclic structure. Monocyclic होगा, एक ही cycle present होता है, single circle present है. It is dicyclic structure. In the purine, the nitrogen atoms are present, and these are the 4 in number. यहाँ पे जो nitrogen atoms present होंगे, nitrogen atom जो present होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 4. 4 nitrogen atom यहाँ पे present है, जबकि यहाँ पे जो nitrogen atom होंगे वो होंगे only 2. In the pyrimidine, they have only 2 nitrogen atoms. These 4 nitrogen atoms are present at different positions. कौन कौन सी उनकी position है? अगर हम बात करें nitrogen atom की, these nitrogen atoms are present at position number 1, 3, 7 and 9. These are the positions of the nitrogen atoms into the purine. And at position number 1, 3, 7 and 9. Whereas these two nitrogen atoms which are found into the pyrimidine में दो ही nitrogen atom है, और ये जो दो nitrogen atom है ये किन position पे होंगे? They will be present at the position number 1 and the 3. 1 and 3. इन 2 position पे ये 2 nitrogen atom present होंगे pyrimidine के अंदर. These purine or pyrimidine, or we can say these nitrogenous base, they make a bond with the pentose sugar. ये pentose sugar के साथ bond बनाते हैं. अब pentose sugar के साथ bond बनाते हैं तो ये कहाँ पे जुड़ेंगे? They make a bond at the carbon number 1 of the pentose sugar.
दिस इज द कार्बन नंबर 1, ये हम देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, दिस इज द फिफ्थ कार्बन। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है पेंटोज शुगर का, इस फर्स्ट कार्बन पे आके नाइट्रोजनस बेस जो है वो अटैच होंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की अटैचमेंट कहाँ होगी, एट दिस फर्स्ट कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। एंड हाउ दे मेक दिस बॉन्ड, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड हाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्म इन द केस ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन की अगर हम बात करते हैं, प्यूरिन के अंदर ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर with the ninth position of the प्यूरिन की। तो हम कह सकते हैं C1 तो हो गया पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 का इसकी 9th पोजीशन के साथ बॉन्डिंग होगी प्यूरिन की। when they join with this pentose sugar, nitrogenous base pentose sugar के साथ join होंगे, then they make a bond and this bond is formed between the carbon number 1 and the 9th position of the purine. Whereas in the case of pyrimidine के अंदर भी pyrimidine भी सेम यहीं पे ही आके बाइंड होंगी at the first carbon of the pentose, but the bond which is formed here is formed between the first carbon of the pentose sugar and the first position of the purine. It's between the C1 and between the first position of the pyrimidine. तो ये first position पे ही आके join होते हैं. This is about the nitrogenous base. ये हमने nitrogenous base कर लिया. The third component that is the phosphoric acid, H3PO4. That is the phosphoric acid. अब हम बात करते हैं phosphoric acid की, H3PO4. In this phosphoric acid, the structure जो होती है, it has here it has 4 hydroxyl group and one is the oxygen and first phosphate or we can phosphate molecule is present there. This is the structure of phosphoric acid and this phosphoric acid join with this pentose sugar at the carbon number 5. ये जो हम देख रहे हैं, this is the fifth carbon which is present outside the ring से बाहर की तरफ present है। इस कार्बन के साथ इस कार्बन के इस बॉन्ड यहाँ पे आके ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं that is CH2OH and here the phosphoric group is attached that we will join here. यहाँ पे हम इसे join करके दिखाएंगे when we make the nucleotide and nucleosides also. So we can say that this phosphoric acid joins at the fifth carbon of the pentose sugar. And when all these three things join with each other, कौन-कौन सी three things हो गई यहाँ पे? First, pentose sugar, whether it is ribose or deoxyribose, it will depend. DNA होगा तो sugar कौन सी होगी? Deoxyribose. RNA होगा तो sugar होगी ribose. So first thing that is the pentose sugar, second nitrogenous base, and third is the phosphoric acid. When all these three things join, then they make a nucleotide. Then we call it nucleotide. इसे हम तब नाम देंगे nucleotide. And we know that the genetic material DNA या RNA, these are the polymers of the nucleotide. ये polymers होते हैं nucleotide के. बहुत सारे nucleotide इस तरीके के nucleotides एक के बाद एक sequence में जुड़ते जाएंगे and then they make a polynucleotide structure that is the genetic material DNA और RNA. तो ये सब हम अभी डिटेल में करने वाले हैं. First of all, let's see this structure in more detail, that how these nucleotides are formed and what are the different types of the nucleotides. Now let's see how the nucleotides are formed or how they are joined. कैसे nucleotides बनते हैं, and we will include one more term which is nucleoside. तो हम nucleoside और nucleotide दोनों के बारे में बात करेंगे. First, let's see about the nucleoside. Nucleosides, and another we will discuss about the nucleotide. इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं. न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है एक्चुअली में? We know that the nucleic acid is made up of 3 components. 3 चीजों से मिलकर बना है nucleic acid. pentose sugar, nitrogenous base and phosphoric acid. इन तीनों के combination से एक nucleic acid form होता है. Well, this pentose sugar, this is the pentose sugar. It has the 5 carbon. This pentose sugar, in this pentose sugar, when the nitrogenous base is get attached, nitrogenous base जब attach हो जाते हैं यहाँ पे at the first carbon of this pentose sugar, this is carbon number 1, 2, 3, 4 and the 5th carbon is here.
then this structure is known as nucleoside. It's without phosphoric acid. Phosphoric acid is not joined yet. यहाँ पे अभी तक phosphoric acid join नहीं हुआ है. Then we call it nucleoside. तब हम इसे क्या कहेंगे? We call it nucleoside. ये nucleoside कहलाएगा क्योंकि phosphoric acid जब यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे आके ज्वाइन हो जाएगा, then we call it the nucleotide. तो जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड में फिफ्थ कार्बन पे हम देख सकते हैं कि at the first carbon the nitrogenous base is there, it is joined here. अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखें, H H then H OH here H and this is the fifth carbon CH2 OH and the phosphoric acid will join here also with hydroxyl molecule OH and here OH also. It will one water molecule is get eliminated and the bond is formed here, that is phosphodiester bond. Phosphodiester bond यहाँ पे form होगा and this is the glycosidic bond and this structure is known as nucleotide. Then we call it the nucleotide. अब हम इसे nucleotide कहेंगे. ये हो गया nucleoside जहाँ पे phosphoric acid join नहीं था and this is the nucleotide when the phosphoric acid is also get joined at the fifth carbon. This is the fifth carbon. This is the first carbon. First carbon पे nitrogenous base attached है, fifth carbon पे phosphoric acid attached है. Then we call it nucleotide. अब ये nucleosides और nucleotides इनकी जो name है that can be different according to the nitrogenous base which are attached to it. यहाँ पे कौन सा nitrogenous base attach हुआ है उसके name उसके basis पे nitrogen nucleotides और nucleosides के name भी different होते हैं. We will try to understand it with the help of one example. एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दिस इज हम डीएनए की स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं. डीएनए है जिसके अंदर एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस जो है वो अटैच है. देन वी कॉल इट डीऑक्सीएडेनोसाइन. डीऑक्सीएडेनोसाइन. दिस इज द न्यूक्लियोसाइड and it is known as deoxyadenosine because the adenine nitrogenous base is joined here. That's why we are calling deoxyadenosine. But when the phosphoric acid is also get attached, suppose यहाँ पे हमने देखा nitrogenous base attached है and the phosphoric acid is also get attached. Phosphoric acid भी यहाँ पे attach हो गया है, तो अब इसका नेम जो है वो क्या हो जाएगा? इस न्यूक्लियोटाइड का अभी न्यूक्लियोटाइड बन गया. अभी तक ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड था. Now it is nucleotide. Now the name of this nucleotide, अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा? नेम होगा deoxyadenosine monophosphate. deoxyadenosine monophosphate. So this is the difference कि on the basis of the nitrogenous base, जो nitrogenous base attach हुआ है उसके basis पे nucleotides और न्यूक्लियोसाइड्स दोनों के ही नाम डिफरेंट होंगे. सपोज यहाँ पे एडेनिन की जगह ग्वानिन अगर अटैच होगा तो नाम हो जाएगा डीऑक्सीग्वानोसाइन. द नेम विल बी डीऑक्सीग्वानोसाइन. सी अटैच होगा यानी कि साइटोसिन अटैच होगा, देन द नेम विल बी डीऑक्सीसाइटिडीन. उस केस में नाम हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन. एंड व्हेन द थाइमिन गेट अटैच्ड हियर देन द नेम विल बी डीऑक्सीथाइमिडीन. तब नाम हो जाएगा deoxythymidine. So this should be in your knowledge also because on the basis of the nitrogenous base the name of these nucleosides and nucleotides are different. तो अलग अलग नाम होगा वो आपको पता होना चाहिए. इसकी टेबल जो है वो बहुत सारी बुक्स में दी होती है, वहां से आप देख के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों के ही नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे according to nitrogenous base. So here we discuss about the nucleic acid, three important component: pentose sugar, nitrogen base and phosphoric acid. ये तीनों component जब join होते हैं then they make a nucleotide. When the pentose sugar is joined with the nitrogenous base then it's known as nucleoside. But when phosphoric acid also get joined by making the phosphodiester bond and this is the glycosidic bond, then this structure is known as nucleotide. And many nucleotides join together to make a nucleic acid. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में ज्वाइन होने से ही एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है. So in the next video we will discuss about the structure of the nucleic acid, that is the DNA. तो हम देखेंगे कैसे डीएनए की स्ट्रक्चर बनी है, कैसे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अरेंज हुए हैं to make a structure of a DNA. So keep watching, keep studying and keep learning.